Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. There is a big positive news which is coming in favor of the Indian Rupee. JP Morgan, who manages one of the major global bond indices, they have said that they are going to include Indian bonds in that. Matlab, starting from June of next year, the inclusion will happen in a staggered phase, and they are looking to give a 10% weightage, which is the maximum weightage in the index to the Indian bonds. तो इसके हिसाब से ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अराउंड 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का फ्लो हो सकता है एज पैसिव इन्वेस्टमेंट. पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडर्स हु लुक टू give track a particular index like a ETF, like so exchange traded funds जो है, for example let's take an analogy or example, Nifty Bs. So जो फंड मैनेजर है ऑफ निफ्टी बीज, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू accumulate the AUMs and invest those AUMs into Nifty related stocks so that the performance of the ETF mimics the performance of the index. Similarly, global bond indices भी है और उसको ट्रैक करता है several ETFs. फॉर एग्जाम्पल JP Morgan को ट्रैक कर रहा है अराउंड क्लोज टू 230-240 बिलियन डॉलर ऑफ AUMs. तो जिसका मतलब एक पैसिव फ्लोज विल हैपन स्टार्टिंग मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड 10 months तक दैट इंक्लूजन की वजह से दैट एक्स्ट्रा फ्लो इज गोइंग टू कम. बट रिमेंबर, this news is being watched by the active fund managers too, speculators too. तो इसके कारण we could see a lot of inflows in the Indian government bond market between now and June of next year. So these are active fund managers, और जिसके कारण एक positive impact आ सकता है on the Indian government bonds as well as on the Indian rupee as well. Now कितना वो large होगा we don't know, it's very hard to say, but it will have a positive impact. And तीसरा फैक्टर ये है कि ये सिचुएशन में जो कैरी ट्रेडर्स है, दे ऑल्सो लाइक टू बेट ऑन द इंडियन करेंसी. कैरी ट्रेडर्स का सबसे बड़ा डिसइंसेंटिव ये लास्ट 18 months में रहा है द रिकॉर्ड लो फॉरवर्ड प्रीमियम. But if they anticipate appreciation in the Indian currency, they can come in, not in a big way, but some bit of carry flows can come in, which can be supportive for the Indian rupee. But out of all this, jo factor we should be aware of is that the global cues are negative, because US bond yields are trading at the highest level since October 2007. Oil prices are ticking higher, right? ये situation में how much of the flows will be able to come in immediately from the carry traders and active fund managers, that needs to be seen. तो अगर exuberance में breakdown होता है in USD, we believe that it will be still within that range, क्योंकि ये 81.60 और 82.30 के बीच it has been oscillating for the past almost 12 months. So इसके लिए अगर नीचे ब्रेकडाउन भी हुआ तो लेवल्स विच वी नीड टू वॉच इज 82.75, देन 82.30, 82.25 के आसपास स्पॉट में, एंड देन 82 के आसपास, राइट. सो 82.30, 82.25 कुड बी टेस्टेड इन दिस एक्सूबरेंस. अगर बहुत ज्यादा पुश किया तो 82 के आसपास, क्योंकि वहां पे वी हैव सीन हैवी आरबीआई बाइंग ऑफ डॉलर्स, एंड आरबीआई वोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू मॉप अप देयर to mop up the dollars to boost their foreign exchange reserves, because global situation remains quite challenging. So that's what we have to understand. So what is the trade? Trade is to short USD. I would advise that you do it through an option and not futures, because volatility mein your futures could get stopped out easily. So it is better to use an out of money put option or a put spread to express your view. But if you still want to do futures, it's fine. फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा 83 के ऊपर स्पॉट में ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. जब तक क्लोज नहीं कर रहा है 83 के ऊपर, इट्स अ सेल ऑन राइज थ्रू फ्यूचर्स. ऑप्शन में भी सेम, 83 के ऊपर जब तक जाके क्लोज नहीं हो रहा है, यू कैन होल्ड योर पुट ऑप्शन. आई वुड नॉट एडवाइज सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, बट एट ऑल इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन लुक एट OTM कॉल्स, बट मेंटेन द स्टॉप. 83 के ऊपर जाके स्पॉट क्लोज हो रहा है, एग्जिट योर शॉर्ट्स ऑफ एनी फॉर्म.
क्रॉस करेंसीज में यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीओ आईएनआर, तीनों करेंसीज विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर आर ऑन अ डाउन ट्रेंड एंड यूएसडी जेपीओ इज ऑन अ अप ट्रेंड. तो इसके लिए ये तीनों करेंसीज यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीओ आईएनआर विल बी ऑन अ डाउनवर्ड प्रेशर. सो द बायस रिमेन्स downward for the intraday. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. A fantastic day ahead.